A comfortable victory for Team India at the end, and they now move up to the top of the points table in this group with this extremely comprehensive win over the Netherlands. This big win will also boost their net run rate as well, and overall, India have done what they were expected to do in this game. And with these thoughts, let's begin the post-match show of this clash between India and Netherlands of the ICC Men's T20 World Cup in Australia. I Damini Basu, on behalf of Rev Sports, take delight to welcome my panelists, Jaydeep Mukherjee and Amit Shah. Thank you so much, gentlemen, for joining. Joyda, we'll begin straight away with you. First of all, please begin with talking to us about your thoughts about India's comprehensive win, 2 on a row, and climbing to the top of the points table. Yeah, I think this was an expected one. I think the skill set of the players was evident. We could make out that their team is playing at a different level from ours, and we understand that because they don't have the sort of domestic cricket we have. It's not as big a sport. It's not the number one sport in their country. It's probably not even the number 4 sport in their country. But yet they're playing the World Cup, which is very commendable. Can you imagine us playing a World Cup? But they are, in spite of that, they are so good that they've kept teams like West Indies out, and yet they are playing the World Cup. But obviously, it was not a level playing field. That goes without saying. In every loss, we try and win something. I still feel against an attack like this, if we can get 179, who will we get 220 against? True. Absolutely. That is my only question. I think batting-wise, every Surya, Virat, Rohit, some form, everything. But that firepower was lacking because, you ideally want, what Norman said, 220 is something that you will more often than not back yourself to do against a team like Netherlands. How many times will an England or a Pakistan or a New Zealand or a South Africa let you get to 220? Exactly. Absolutely. एंड विद दीज थॉट्स अमित जी आपके पास आऊंगी. जॉयदा ने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट यहाँ पे बताई है कि हाँ जी बिल्कुल इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से जीता है ये मैच, लेकिन जिस तरह नॉर्मन ने भी कहा था ना कि यही एक गेम है और यही एक ओपोनेंट है जिनके खिलाफ आप एक 220 जैसा टारगेट, एक बहुत ही हाई टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहली बैटिंग चूज करके. तो 179 का एक टारगेट, एक लक्ष्य जो इंडिया ने किया जी, बहुत ही अच्छा टोटल था. लेकिन कितने संतुष्ट आप बताइए, आप थे इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस से? जी देखिए, वाकई एक संतुष्टि, और क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा जिनका फॉर्म नहीं था, आज वो फॉर्म वापस लौट चुका है. 3 हाफ सेंचुरीज, टॉप 3 ऑर्डर्स की 3 हाफ सेंचुरीज. विराट तो वाकई फॉर्म में है, उन्होंने बता ही दिया कि ये वर्ल्ड कप उन्हीं के नाम होगा, हाईएस्ट रन गेटर में शायद उन्हीं का नाम होगा. लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात लग रही है कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं. ये हमें दरकार थी, क्योंकि कई अरसे से रोहित के बड़े रन्स नहीं आए. रोहित दिखते हैं अच्छे फॉर्म में, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते. लेकिन जब एक खिलाड़ी की हाफ सेंचुरी हो जाती है ना, तब वो अपने आप में एक भरोसा आ जाता है. और ये मैच में काफी जरूरी था, क्योंकि इसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलना है, वो भी ऑप्टस मैदान पर्थ पर, कि जहां की विकेटें जो है वो हमेशा से तेज गेंदबाजों को राज आती है. और आज उन्होंने एक जलवा भी दिखा दिया. एंड्रेन और नोकिया ने कितनी अच्छी गेंदबाजी करी है. तो एक बड़े मैच से पहले हमारे तमाम अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाजों का फॉर्म में आना, ये एक टीम के लिए पॉजिटिव साइन है. मैं ये नहीं कहता कि भले आप नीदरलैंड के सामने खेल रहे हो, किसी के सामने खेल रहे हो, कोई भी टीम है अगर इस स्टेज तक आई है तो उनमें वो मादा है. खेल ठीक है, आगे पीछे आपका गेम चलता रहता है, लेकिन इस नीदरलैंड टीम ने हमारे सामने 100 रन बनाई, ये वाकई काबिले तारीफ है. और जैसे जॉयदा ने कहा कि ये टीम जो है, ये वेस्ट इंडीज जैसी भारी भरकम टीम को हरा के आ रही है. क्योंकि अगर आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देखें, ज्यादा से ज्यादा जो प्लेयर परफॉर्म करते हैं कैरेबियन प्लेयर हैं. और ऐसे ही टीम को अगर ये टीम हरा के आ रही है, तो ये टीम में जरूर एक मादा है जीत रखने का. ठीक है, आज उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लेकिन हमारे एंगल से अगर मैं कहूं तो हमारे सारे ही गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया. सबको 2-2 विकेट मिले, 1 विकेट मिले. और अक्षर पटेल से मैं खुश हूँ, 2 विकेटें मिली. और उससे ज्यादा मैं खुश हूँ रोहित शर्मा, जिसकी मैंने भविष्यवाणी भी की थी मैच से शुरू होने से पहले कि रोहित आज रन करेंगे, तो मैं खुश जरूर हुआ. जैसे जॉयदा कह रहे मिठाई कहाँ है, तो जरूर मिठाई मिलेगी. जॉयदा आपको भी मिलेगी और सभी को मिठाई मिलेगी. और साथ ही साथ अमित जी हमारा सबका दिन अच्छा गया. आपने कहा था रोहित शर्मा अच्छा गया जी. मैंने कहा था 2 स्पिनर्स अगेंस्ट देयर बैटिंग, वो भी अच्छा गया.
Yes. मेरा हार्दिक पांड्या का तो बैटिंग से मौका नहीं आया, लेकिन मेरे सूर्य कुमार यादव बोला था वो भी चल गया। और विराट कोहली को तो हम हर टाइम बोलते थे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हर दिन बोलना नहीं पड़ता है। तो विराट कोहली के बारे में हर दिन बोलना नहीं है, वो गेम चेंजिंग प्लेयर है। बट वही लगता है कि और थोड़ा खुल के खेलते ना, शायद हम 210 पे 6 होते, बट शायद और थोड़ा वो जो हम शेल में खेल रहे हैं, शायद 10-10 बॉल मिल जाता सबको बीच में। दिनेश कार्तिक को मिल जाता, अभी दिनेश कार्तिक ने 2 मैच में 1 बॉल खेला है। जी। हाँ, तो उसको शायद थोड़ा 8-10 बॉल मिल जाता। हार्दिक को तो 40 बॉल मिल चुका है, सो ही इज ओके। बाकी जो अक्सर को मिल जाता 8-10 बॉल, बिकॉज दिस गेम इंडिया वाज ऑलवेज विनिंग। बट विन में भी ना हम कुछ चीज को पाने का चेष्टा करते हैं। वी ट्राई टू अचीव अ फ्यू थिंग्स इन अ विन आल्सो फॉर द टीम गोइंग फॉरवर्ड। बहुत अच्छी बात कही जोएदा आपने। मैं यहाँ से एक बात इसको दोहराना चाहूंगा, इस बात को आगे ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है, यहाँ आपको प्रैक्टिस के दिन शायद एक ही मिलते हैं, क्योंकि अभी इतने टूर्नामेंट फास्ट है, टीम ट्रैवल कर रही है, पर्थ जाएगी, एक दिन आपको प्रैक्टिस का मिलेगा, दूसरे दिन वहां पर दूसरी 2 टीमें मिल रही हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो एकदम सटीक बात कह रहे हैं कि अगर आपको एक ही प्रैक्टिस सेशन मिलता है, प्रैक्टिस सेशन की चीजें मैच में वो मुकम्मल नहीं हो पाती। तो अगर जैसे दिनेश कार्तिक और कुछ प्लेयर्स को ज्यादा बॉल खेलने मिलते तो डेफिनेटली वो एक उपयोगी हो सकता था। मैं जोएदा पूरी आपकी बात से एग्री करता हूँ। और अमित जी, नेट में ना रन पता नहीं चलता, हर बॉल मार के बैट्समैन बोलता है छक्का है और बॉलर बोलता है आउट है, लेकिन वो बीच में जाके पता चलता है कौन सा है। एग्जैक्टली बहुत ही सही बात है। लेकिन देखिए, दिन अच्छा रहा। मेलबर्न से तो अच्छी खबर आई थी, सिडनी से भी अच्छी खबर आई, और काफी सुखी है। और जिस तरीके से टीम पॉजिटिव माहौल में लग रही थी, जैसे कल हम डार्लिंग हार्बर में घूम रहे थे, शाम को सारे प्लेयर्स अपनी वाइफ के साथ घूम रहे, चिल हैं, उनको कोई फर्क नहीं था कि क्या होगा, उनको केवल जीतना है। तो बस आज और एक जीत के साथ टीम जो है टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। अब ये टीम जो है ये हवा में, अब यहाँ से इनको जो है वो कोई पीछे नहीं खींच सकता। ये टीम वर्क है और ये आज उन्होंने दिखा दिया है। जी बिल्कुल। And with these thoughts, Joyda, I would like to take a cue from what you just said about Team India's batting. Please explain to our viewers, talk to our viewers about this. Would you say that Team India reaching that coveted 210 or 220 target would have been possible had even KL Rahul also been among the runs today? और इस मौजू पे मैं चाहूंगी अमित जी भी अपनी बात रखे। पहले तो जोयदा से हम जान लेंगे वो क्या सोचते हैं। Joyda. No, you see, KL Rahul did not consume a lot of balls. He got out. See, runs are always scored by the batters who spend time in the middle. And if you look at the strike rate of the batters who spend time in the middle, that's where the answers lie. Because somewhere along the line, you just feel, see, I know 179 was enough. But I'm saying you cannot score 179 against England, Australia, South Africa and score 179 against Netherlands also. Absolutely. Because ultimately it's a game of skill. एवं बॉलर का जो लेवल है उससे गेम शुरू होता है। वो बॉल हाथ से जब he releases the ball, that's where the game starts for the batsman. Otherwise batsman doesn't start the game. It's the bowlers who start the game because ball bowler के हाथ में होता है. So once the bowler goes and releases the ball, then the batsman reacts to that ball. So that is why I'm saying, so batsman reacts to the ball. So it is the level of the bowler that makes you decide what you're going to do. Along with that comes the pace and the conditions and blah blah blah. But main thing is the bowler. Jimmy Anderson डाल रहा है या कौन डाल रहा है, कौन सा विकेट में डाल रहा है, नया बॉल से डाल रहा है, पुराना बॉल से डाल रहा है, सीम कर रहा है, नहीं सीम कर रहा है, स्पिनर डाल रहा है, टर्निंग ट्रैक है, बाउंड्रीज कितना बड़ा है. Few questions come with the person who's bowling. So that's why I thought with the bowlers that we saw today, we could have got 220, 230. We might not have been 2 down. We might have been 7 down. But that's not so bad. Absolutely. Because keeping wickets, you want to bat as freely as you can, so that next time the situation comes, suppose South Africa get 197. Yeah. Then you've got the freedom of going and playing freely, which you have done in the innings before. So you can take a cue from that and carry on. Absolutely. अमित जी, अब आप बताएं हमें, आपको क्या लगता है कि केएल राहुल अगर थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट कर पाते तो क्या आज 200 का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर पाती? मेरा यही एक कंसर्न है, क्योंकि मैं कल रात को मतलब चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स के साथ में था, हम बैठे हुए थे, तो मैंने यही सवाल उनको भी पूछा। जोयदा आप भी बताएंगे, क्योंकि फिलहाल आप डोमेस्टिक सीजन में काफी अच्छा कमेंट्री कर रहे हैं, आपने कई टैलेंट देखा है
बड़े लोग, अच्छे प्लेयर्स अच्छा रन कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ रन कर रहे हैं, शुभमन गिल रन कर रहे हैं। मैंने यही सवाल पूछा, अगर केएल राहुल, हम कह रहे हैं कि ये केएल राहुल फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन कितना मौका और उन्हें दिया जाए? क्योंकि अगर 2 बड़े टूर्नामेंट आप फेल हो गए हो, आप 2 बड़े मैच में वर्ल्ड कप में फेल हो गए हो, क्योंकि लड़के पीछे रन करने के लिए बैठे हैं। और चयनकर्ता ने ये भी कहा है, चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ने, कि देखिए अभी अगर कोई भी लड़के रन नहीं करते, देन रिप्लेसमेंट के लिए पीछे 4 लोग बैठे हैं। ओपनिंग स्लॉट में आप देखिए शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ये जो लड़के रन, ईशान किशन जी, कई ऐसे लड़के जो बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक हाँ जी सर। अमित जी, ये केएल राहुल गेम चेंजिंग प्लेयर है, और जब गेम चेंजिंग प्लेयर आता है वो 100, मुझे पता है वो आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली था, आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा भी थोड़ा बहुत है। तो आपके पास जो स्पेशल प्लेयर्स आते हैं ना, जो गेम चेंजिंग प्लेयर्स, उसको आप थोड़ा सा लंबा रोप देते हैं फॉर्म में आने के लिए। वो जो 100 किया था वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अमेरिका में, वो जो नॉक्स खेले हैं बीच में, हाँ आउट ऑफ फॉर्म है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, बट यही बोल रहा हूँ कि बिकॉज दे आर स्पेशल प्लेयर्स। अभी सूर्य अगर आउट ऑफ फॉर्म रहेगा 6 महीना तो उसको 1 साल मिलेगा, लेकिन शायद हुडा को नहीं भी मिल सकता, बिकॉज हुडा इज नॉट एज मच अ गेम चेंजर एज सूर्य इज। ट्रू। So this long rope or the leash that is given is because of what he can do with the cricket bat. It's not happening. Nobody knows better than him, and nobody's feeling worse than him. But the fact that you always feel it's coming. So we could have dropped Virat also. But look what Virat did in Australia. It's true. So he's not at Virat's level, but he's halfway there. That is why he's been given probably half the time that Virat has been given. It's true. But if बस वही चाहते हैं कि जैसे रन्स बाकी के खिलाड़ियों के जाए, और विल प्रे कि केएल राहुल विल कम इन अ फॉर्म वेरी सून, बिकॉज उनको खुद को भी लग रहा है नेट्स में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट, बस एक क्लिक होने की देर है। जैसे रोहित भी थोड़ा आउट ऑफ कलर चल रहे थे, आज रोहित को फॉर्म मिल चुका, और आशा करता हूँ अगली मैच में केएल राहुल जो है फॉर्म बन के निकलेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी अभी से। आप उनको प्री शो में ले लीजिएगा तो वो फॉर्म में आ जाएगा। डेफिनेटली दादा, डेफिनेटली, श्योर। आज जो था एक कहते हैं ना हाईलाइट, सबकी प्रेडिक्शन आज बहुत अच्छी तरह से, बहुत उम्दा तरीके से आज काम आई। सबकी प्रेडिक्शन, छोटा प्रेडिक्शन सबने बनाया, सबके प्लेयर्स ने कहा कि नहीं हम खड़े उतरेंगे, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात थी। सो विद दीज थॉट्स Joyda, let's progress a bit more into this game. If it was Team India's batting that was going on as in discussion right now, talk to us about your thoughts on Team India's bowling with the likes of Ravichandran Ashwin, Arshdeep Singh grabbing wickets, Mohammad Shami. What do you think of them? No, I think we were superb as a pack. I think first up, Bhuvi, Arsh, everybody was good. Shami was good. I think the fielding could have been a little bit better, but it just looked a little lazy, the fielding. But sometimes what happens is when one team has got 179 for 2 and the other team is 70 for 5, there's a little bit of slack in the body. It happens to everybody because they know they're winning the game. Absolutely. So I think the fielding was not as sharp as it can be, but that also is related to the where the match stands. If it's a match, if there were 70 for 1 in 7 overs, then you would have seen that level fielding. It should not happen, but it drops a little bit of lethargy, for lack of a better word, but a little bit of casualness comes in, because at the end of the day, And I thought the spinners were superb. Aksar needed a game like this because he got carted for 20 plus in that 1 over he bowled. No matter how good you are, no matter how well you've done well, after you've had a bad game in a big game, World Cup, T20, Pakistan, you need a good game to come back. Just to yourself that I'm back where I belong. You don't want another 438 going back. यार क्या चल रहा है यार, इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा था एशिया कप, अभी इधर आया हूँ, 1 में 22, दूसरा में 4 में 38, नेदरलैंड्स ठोक दिया. So that's when you also want your confidence to come back. Shubhayan has woken up from his afternoon siesta, is looking all fresh. No. Welcome, Shubhayan. I'm just joking, Shubhayan. I know you don't sleep. He's a workaholic. Welcome, Shubhayan.
So, Shubhan, we were having a very detailed and a very animated discussion about India's thumping win over Netherlands today, a whopping 56 runs, and this propels them to the top of the points table. So, I'll come to you. Please do tell us, first of all, about your thoughts about India's performance today, their win, and any extra thing you felt should have been done by Team India, or you were absolutely satisfied with their performance. No, I guess see, when it comes to the both the teams, Netherlands, we talked about that in the preview as well. They are not the best of sides, the best of T20 sides. Coming to the batting team, batting department, Rohit, Surya, Virat, all go getting 50s. Very good signs. KL Rahul, another a weak link. I won't say weak link, but yes, he needs to have some runs under his belt to gain some confidence, which I spoke about in the preview as well. And bowling wise also, how good was Bhuvneshwar up front? He was terrific. He was terrific. Akshar also got wickets, so again a confidence booster for him. Arshdeep a bit expensive, but again he got into the act. So a good outing for Team India. Professional outing, got those wins. So yeah, all good so far. Absolutely, all good so far. And the update comes that the player of the match from this game is Surya Kumar Yadav. There were 3 half-centurions. Take a look at that bright smile on Joydeep Das face again. His favorite player has backed the player of the match again. Yes, there were 3 half-centurions from Team India's batting lineup, but it was ultimately Surya Kumar Yadav for his extreme responsibility shown. For his strike rate. Absolutely, for his strike rate. And of course, the amount of responsibility that he showed. If this is the point I was trying to make, you lose 3-4 more wickets, but everybody bats at 150, then you go to 220. Yeah, Absolutely. दिखा दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में सूरज रात को भी चमकता है और पूरे वर्ल्ड कप में चमकता रहेगा. जी बिल्कुल, हम यही उम्मीद रखेंगे कि सूर्या पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए चमकता रहे, हमेशा चमकता रहे. I'm his biggest backer, but he got to do it in big games. I mean, to be known as the greats in T20, Asia Cup, World Cup. He's now very, very good. He's brilliant. But great होने का जो वो एक स्टेप ऊपर है, वो वाला फ्लोर में सब अलाउड नहीं है. उसके लिए की कार्ड अलग है और वो की कार्ड अर्न करना पड़ता है. I'm watching him, Dada. I'm watching him from the school ages, from school days, from the Mumbai club level. He's batting like phenomenal. ऐसे ही बैटिंग करते थे, लेकिन once he played for MI and जब वो मुंबई इंडियंस खेलने के बाद जब इंडिया के लिए आए, तब कुछ शॉट्स तो ऐसे वो खेलते हैं जो क्रिकेट की बुक में ही नहीं है, थियरी बुक में नहीं है, ऐसे शॉट्स. जी before he came to MI, he was in KKR. Yeah, he was in Yes. Gautam has seen him at number 7, number 5, number 1. And I say this with pride that he is the only player in the Indian team, only player who can bat anywhere between 1 and 7 and do the job. Right. Absolutely. Because उनका जो skill sets चाहिए, उनके पास है. And the reason, what you rightly said, Amit ji, it is 10 years of first-class cricket that has made Surya Kumar Yadav. He's not a spring chicken. He's not just fallen from the sky. कहाँ था यार ये 10 साल मुंबई के लिए ऐसे मैचेस जीता है. मैं मुंबई स्टेट टीम का बोल रहा हूँ. विजय हजारे, मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, इंडिया ए 7-8 साल घिसने के बाद तैयार हुआ है. डायमंड तो था, लेकिन काफी मिट्टी लगा हुआ था. ट्रू. इसीलिए उसको वैल्यू भी पता है इस इंडियन टीम का. And also his development has been better compared to a Rishabh Pant, who is probably as talented, if not more than him, but has not been through this polish. तो इतना चमक नहीं रहा है because he's 23 years old. He's barely played domestic cricket. Right. और अभी आजकल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं. आईपीएल आने के बाद, आईपीएल जब तक था नहीं, सब ये तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण सब वनडेज खेलते थे, T20 विजय हजारे खेलते थे, विल्स ट्रॉफी खेलते थे, रणजी ट्रॉफी खेलते थे. लेकिन अभी हमारा डोमेस्टिक हो गया आईपीएल. तो आईपीएल में अगर तुमको बारी नहीं आ रहा है फॉर अ डोमेस्टिक प्लेयर, दैट इज व्हाई द मुश्ताक अली बिकम्स सो इंपॉर्टेंट, द विजय हजारे बिकम्स सो इंपॉर्टेंट. अभी पृथ्वी शॉ, मुश्ताक अली खेल रहे, ही इज लुकिंग लाइक ही डजंट बिलोंग हियर. So Surya has also come from there, but to go to the next level, वो जो की कार्ड मिलने के लिए, एक्सक्लूसिव फ्लोर के लिए, पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल्स में,
बड़े गेम्स में जहां पर डू और डाई, जहां पर खत्म है, वो करने के बाद जो रोहित ने किया है, जो विराट ने किया है, वो करने के बाद आपको वो वाला एक्सक्लूसिव क्लब में मिलेगा. वंस यू आर देयर, देन यू आर अप देयर विद द बेस्ट. डेफिनेटली. और दादा जैसे आप एग्री करेंगे जोयदा उनसे, क्योंकि इंग्लैंड का इतिहास यही रहा है. अगर इंग्लैंड के प्लेयर कोई फॉर्म में नहीं रहते, 2 टेस्ट मैच के बीच में एक काउंटी मैच होता है, वहां चले जाते हैं, फॉर्म में नहीं है, वहां जाते हैं, रन्स करके आ जाते हैं और फिर अपने नेशनल टीम के लिए रन्स करते हैं. हमारे प्लेयर्स को ये सीखना बहुत जरूरी है. श्रेयस अय्यर फिलहाल अभी मुश्ताक अली के मैचेस नॉकआउट खेल रहे हैं. यहाँ पर उन्हें स्टैंड बाय में आना था, लेकिन सिलेक्टर्स ने कहा नहीं, यहाँ पर्याप्त लोग हैं, आप अगर जाकर के खेलेंगे तो कुछ अच्छी चीज हो सकती थी. वो मुंबई के लिए खेले जरूर थे. And that is the best thing for Shreyas Iyer also. Now the playoffs are starting on the 30th. In the semis and the finals, he gets a 42 ball 84 and a 52 ball 100. Exactly. What is the point of being with the team and not playing? Definitely. How are you knocking on the door? How will you knock on the door if you're not in the room? True, definitely. और जैसे सौरव गांगुली पूर्व बीसीसीआई प्रेसिडेंट, हर समय जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बैकअप देते आते हुए, और हर बार वो कहते हैं कि फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को खेलना चाहिए, उनकी जोर ज्यादा है, पैसे बढ़ा दिए हैं प्लेयर्स के, सब कुछ कर दिया. और आज तो जैसे हमने कहा कि विमेंस प्लेयर के भी पैसे बढ़ा दिए, तो प्लेयरों को खेलना चाहिए. डोमेस्टिक क्रिकेट से ही प्लेयर तैयार होता है. ये रोहित शर्मा को मैं देखा हूँ स्ट्रगल करते हुए, मैं देखा हूँ केएल राहुल को बंगाल के साथ स्ट्रगल करते हुए. तो इन्होंने जो हम लोग डोमेस्टिक में बात किया था, शुभायन नोस दैट ये जो जाके जिमी एंडरसन को खेल रहे हैं ना, तो ये इंडियन बॉलर्स में जो जिसके 400 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं, इन्होंने उसको हेल्प किया है तैयार होने में, टू बी एबल टू गो एंड प्ले जिमी एंडरसन. जी स्ट्रेट अवे क्लास 12 से उसने पीएचडी में नहीं किया है, कॉलेज भी किया है. वो कॉलेज ये वाला है, 3 साल 4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट. सौरव गांगुली का नाम लिया, 92 में ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके बाद 92 से 96 के बीच में आके रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी इंडिया एक खेला 96 में. फिर जब मौका मिला, देखिए उसके बाद दैट इज द फिनिशिंग स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने पढ़ाई किया, लेकिन प्री टेस्ट, मॉक टेस्ट वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए तैयार होने के लिए. Yes, definitely. And that's why we have just seen Arshdeep Singh kind of a bowler who played a domestic season very well. IPL में परफॉर्म किया, शायद उसी वजह से जो है वो आज भारतीय टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से जो, और अर्शदीप सिंह अंडर 19 वर्ल्ड कप के टाइप का अर्शदीप सिंह स्टार्टर नहीं थे, आपके ईशान पुरेल स्टार्टर थे. पंजाब किंग्स में भी दोनों साथ में. और अर्शदीप का फिर करियर आप देखिए, क्योंकि उनको चांसेस मिले, फिर वो लग भी आ जाता है आप कैसे परफॉर्म करते हो. Dominic got 10 questions waiting. Dominic can't wait for us to finish. This is Joyda's old tactic to get us all back to the discussion. Amit ji, मैं आपके पास आऊंगी. एक बहुत नहीं, I must admit one thing. I'm loving this discussion. You guys chipping in with such lovely inside stories. This just enlightens all of us so much. Amit ji, मैं आपके पास आऊंगी. इंडियन टीम की बैटिंग को लेकर इतनी बातें हो रही हैं. इंडियन टीम की बॉलिंग डिपार्टमेंट में 4 बॉलर्स, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन, इन चारों ने 2-2 विकेट चटकाए. मोहम्मद शमी ने 1 चटकाया. आप बताइए, इन 5 में से किस बॉलर ने, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन पर्सनली इन 5 में से किसने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है? देखो, थोड़ा बायस में हूँ, मैं अक्षर पटेल पर एक थोड़ा मेरा ध्यान होगा. लेकिन भूवी, मैं कहूँ जो टेम्पो पूरा सेट किया भुवनेश्वर कुमार ने, क्योंकि शुरुआती ओवर में आपने गेंदबाजी की, आपने बहुत कम रन दिया. आप देखिए सिंगल डिजिट में उनका फिगर है, 2 विकेट उनके नाम है, लेकिन फिगर देखिए सिंगल डिजिट पे. तो एक शुरुआती ओवर में जो आपने एक जो आपका पावर प्ले है, उसमें अगर आपने विदेशी बैट्समैन को, जो ओपोनेंट बैट्समैन को बांध के रखा है ना, वो एक सबसे बड़ी बात होती है. वही वो टेंशन में आ जाता है. और पेस बॉलर जो है वो विकेट्स हंटिंग में लेते हैं. अगर एक एंड से आपका गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, सेकंड एंड से जो है वो इतनी अच्छी गेंदबाजी आपके ओपोनेंट के गेंदबाज करते हैं. भुवनेश्वर कुमार माने जाते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स में ओपनिंग में विकेट लेते हैं और साथ में रन्स भी कम देते हैं. तो आज उन्होंने दिखा दिया कि जी, very important point Amit ji is saying, very important. And when you have a weak link in your bowling, they will wait for that link. Absolutely. If there's one guy, if there's out of the 5, if you have one guy and you need 12 runs and over, we batters will be talking, usko aane de. जो करेंगे उसको करेंगे, उससे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, no problem.
लेकिन भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप को चांस लेके विकेट नहीं देंगे. हम वेट करेंगे उसको, हमारा वीक लिंक को आने के लिए. वो वीक लिंक ना रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then Right. you have to treat Absolutely. all five, and you have to go with your plans against all five. Sometimes we've seen when we play with one lesser bowler, we can make out. In fact, all best T20 teams, I'm just not saying country, I'm saying IPL and everything, 7 bowlers. CSK Right. back in the day, सूर्य बॉल टर्न कर रहे, सुरेश रैना 4 ओवर 24-3, उसके बाद 5 मैच नहीं डाला. He was the 7th bowler. उनके पास 5 तो है ही, और दो. That is been one of our problems, that in the top order nobody bowls. We used to have Saurav bowl, Sehwag bowl, Sachin bowl. Nobody Right. bowls. रोहित शर्मा का कुछ इशू है शोल्डर में. Absolutely. Otherwise रोहित शर्मा का हाथ से बहुत अच्छा बॉल, he has a hat-trick in IPL. Yeah. Yes. So Yes. उसका हाथ से बहुत अच्छा बॉल निकलता था, लेकिन उसका एक शोल्डर इशू है कुछ, जिससे it's a shame, because he could have actually been an easily a 4-over bowler. Absolutely. So we don't have Absolutely. bowlers, we don't have batters who bowl, and our bowlers don't bat. I'm keeping Hardik out, because Hardik is, he can do it all. But besides, हमारे पास bowling. That's the reason why Bhuvi has to play. That's the reason why Ashwin has to play Ashwin. ahead of Chahal. Yeah, Ashwin. We don't have Ashwin as 5 test match hundreds. Test match hundreds, 5. So when you look at others, you need some. If Shami had 2 first-class hundreds, like Umesh Yadav has a first-class 100. If Sami also would have 2 first-class hundreds, then our batting would become longer, and we would get more confidence going into games. अभी हमको पता है या नहीं यार, हमारा बैटिंग बहुत वीक है पीछे में. So we have to play Aksar, we have to play Ashwin. Chahal नहीं यार, Chahal comes in again, batting becomes another longer. So that is the issue. That's the reason why these Aksar, Jadeja, Shahbaz, they become very important, because they bat and they bowl. Right. Absolutely. And on one final question to Shubhan before I wrap up this session, that would be, let's Shubhan talk a little bit more about Team India's batting. Yes, the discussion has already taken place. Just I need you to place your thoughts for us. Is KL Rahul, Joyda and Amit very nicely portrayed how this was one game where if Team India wanted, they could have breached that 200 or that 210 or 220 mark, which they couldn't. In fact, on the contrary, they, let's just use a strong word, just posted 179, which according to Team India standards is quite moderate. So, we have 3 half Against centuries. Netherlands. Would you say? Absolutely, against Netherlands, absolutely. So Shubhan, would you say that KL Rahul has been struggling to be among the runs, had a little bit of contribution for him, this match being an opportunity, and where he got to bat first? Perhaps Team India could have got that oomph, that push, that yes, we have crossed that 200. And how would you see KL Rahul improving his mindset that okay, I need to give myself some time? Right. In the preview show also, I said about this point that KL Rahul with an average of 19 since October 2020, this was his perfect opportunity. Or, of course, we can say he was unlucky. He didn't take the review, or Rohit didn't back him with the review. But yes, like the way he was approaching a good 6, he got a good start. But again, we want in Australian conditions where there's good carry, good bounce. People like Rohit, Rahul, they enjoy that natural bounce, and we are expecting Rahul and Rohit to score runs. Again, I'll come to Virat Kohli also. He ended up with a strike rate of 140. But again, you compare that knock to Riley Russo's century. He took 56 balls to 109. These are the kind of power players other teams have. If a Alex Hale starts, he will end up scoring a century in 60 balls. If a Marcus Stoinis starts, we saw what he did in the last match. So that is the kind of difference. If you are taking 40, 30 balls, in my opinion, how I view T20 cricket, if you are taking 30, 40 deliveries, you need to have at least 80 runs on boards, play with 180, 200 strike rate. Because there's no other. Yeah. And sometimes on that, you can be 22 balls, 35, but ultimately end up 48 balls, 92. Exactly. Right. You make it up absolutely. Right. So you look at Riley Russo today. How did they get 200? Somebody, if you lose wickets, it comes down.
If you don't Right. lose wickets, you either up the ante or you get out. Right. What we saw with Ravichandran Ashwin in Rajasthan, he scored one half century in between. But then in the next match, he failed to get going and he just walked off it. He was retired out. Karen Pollard did the same. He was retired out because he was failing to connect. So this is the option we have when you have Hardik Pandya, Dinesh Karthik, and Akshar Patel waiting down the order who can come and smack the ball from word go. If you are not able to get going, then I think India needs to, Rahul Dravid is a very tactical, matchup heavy coach. I think this is the option which I'm pretty sure they are going to use up in the coming matches. And I also have to say it's a special word for Surya because batting did not look easy on this wicket. On a wicket where Right. Virat did not look at the same flow that he did against Pakistan is only because of the deck where the ball pitches. There, Surya batted like it was a different pitch. And that is something he can It, do it to was you. it was the same pitch where Bangladesh and South Africa played. So maybe by the time the second half of the first innings and the second innings came in, the pitch was dying down a bit. It was a No, bit sticky. generally, if you see the shot making, it wasn't easy in the whole game. Even when Virat was hitting the shots, it's True. only at the back end that Virat hit some boundaries. Yes. Otherwise, Virat at one time was run a ball. Yes. Yep. Yes, absolutely. So when he was getting set, it was run a ball. But Surya, even when he was getting set, he was batting at 200 strike rate. Is what I'm trying to say. Right. Yes, That's the absolutely. difference. Absolutely, that's the difference. And with these thoughts, we come to the end of this post-match show of this very important clash between India and Netherlands. And India managed a very comprehensive and thumping 56-run victory, which has now propelled them to be at the top of the points table of their group. And to all my viewers, you were hearing my panelists Jaideep Mukherjee, Shubhayan Chakravarti, and Amit Shah with their views. Thank you so much, gentlemen, for joining and sharing your thoughts with us. And mark the date, we meet again on the 30th of October when India lock horns with South Africa in Perth. Until then, take care of yourselves, enjoy other games around the world, and it's goodbye from India. Thank you. Thank you. Bye.